वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 पार्ट 4। पहले हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 6। हियर आई विल स्टडी द बाइसल्फाइड एडिशन। Bisulfite addition. So bisulfite is a nucleophile, and the main importance of these reactions are basically for the purification because they are crystalline product. Okay, so how these reactions will take place? So basically, let's take an example of an acetone and bisulfite has been taken. So the structure of the bisulfite are as it is like this is having the lone pair of electron, and it is having the O minus, and in one part of this OH O minus Na plus. So basically this Na plus we have written like this. Okay, anyway, so now there are the two nucleophilic center. One is the O minus, can act as a nucleophile, as well as the sulfur lone pair of electron is having the lone pair of electron. It can act also as a nucleophile. So now we have to understand which will attack. See, if the oxygen minus is having the negative charge is attacking to this, then the negative charge will be diminished. But if the lone pair of electron of the sulfur is attacking, then we'll see that the negative charge will be remaining the intact. How it is so? So we'll see. So sulfur lone pair of electron will attack into this, it will form the O minus. So methyl, it is O minus. Since sulfur has donated the electron, so sulfur will be having the positive charge. Double bond oxygen, OH, here O minus, Na positive. Okay. So after this part, what will happen? This O minus will abstract this particular. Okay. So after this, what will happen? This negative and positive. Whenever there will be remaining a negative and positive charge, that means that will form the double bond oxygen. Okay. And this negative charge will abstract this proton and will form the O negative. So this will be OH, sulfur double bond oxygen, and will still be having the negative charge. Okay, and Na positive. So this is the bisulfite addition compound. They are mainly crystalline, and they can be used to purify liquid aldehydes by recrystallization. Okay, now these particular reactions are basically the reversible reactions. How? We will see in the next. So now next question is the question number 16. Question is, first one NaH SO3, in the second part NaCN. So what will be the product? Now we need to give the answer of this question. So in the first part we have already seen, so we're not writing the mechanism again. So this will be basically formation of the product. There are the two oxygen and there is one negative. Okay, now after this what will happen? See, this OH and O minus, so they are in a particular group, so they are interconvertible with each other. That means these are interchangeable. This O minus can abstract this particular proton, and here it will oxygen O can be negative, and again this will be OH. Okay, so we'll be writing that because of this reversibility.
this will be O minus, and we can write this as a OH. And let's suppose S double bond O, so we can easily write this as a S plus O negative, because there is electronegativity difference in between the oxygen and sulfur. Since oxygen is more electronegative, that's why this particular form will be predominant. So oxygen negative and this will be O negative, oxygen positive and the sulfur will be negative, right? So now what will happen to this? So O minus can form the double bond and it can eliminate, because the positive charge on the sulfur is not stable, so it will try to neutralize and this bond will be eliminated. There is forming the positive charge, इसमें कार्बोनिल बन जाएगा. ओके, इसके बाद Cn minus NaCN, since we have used this NaCN, Cn minus will be attacking to here, this will be forming the O minus, and this O minus will take up this proton. So this will be the final product. Now question number 17. This is the last question of this chapter. After this chapter has been completed. Okay. Okay. So what will be the product? Now I'm giving you some of the options, and you have to give the correct answer into the option, into the comment section. This one is the A, this one is the B, okay, and option C, option D none. Okay, and this is A, and after that lithium aluminum hydride, then this is the product B. So you have to give the answer what is the product A and what is the product B. Okay, I'm writing another option. This is E. Now you have to give the answer what is the product A and what is the product B. तो अभी हम लोगों का कंप्लीट हो गया चैप्टर 6. नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे. उसके पहले मेक श्योर कि चैप्टर 6 बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए, और जो 17 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सिर्फ देखे, आंसर को ना देखे तुम कर पाओ. इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे तो पूरा क्लेडन ही कंप्लीट हो जाएगा. ना मेक श्योर कि आपने पूरा 17 क्वेश्चंस बिना आंसर देखे पूरा सब कुछ सही कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. एक बार देखो, उसके बाद तो बस आंसर देख के ही हो जाएगा, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. क्योंकि 17 क्वेश्चंस अगर आपको सही हो जा रहा है विदाउट एनी मिस्टेक, दैट मीन्स आप ये चैप्टर अच्छे से लर्न कर चुके हो. ठीक है, तो आपको सिर्फ 17 क्वेश्चन ही करना है. 17 क्वेश्चन अगर हो गया मतलब यू आर डूइंग द ग्रेट थिंग. एंड द क्वेश्चन बैंक, ट्राई टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक ऑन योर ओन. ओके, क्योंकि आप अगर खुद क्वेश्चन बैंक बनाएंगे वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है. क्वेश्चन बैंक कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने क्वेश्चंस किया इस तरीके से देख के क्वेश्चन पेपर बनाना है. जैसे चैप्टर 6 हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर 6 का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लीजिए. इसके बाद जब चैप्टर 7 करेंगे तो चैप्टर 7 का क्वेश्चन बना लेंगे. क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको पता है कि इसमें 17 क्वेश्चन ही है बस, तो एक लिमिटेड हो गया ना, कितना पढ़ेंगे आप. लेकिन ये 17 क्वेश्चंस का अगर पता है आपको, ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट एनी मिस्टेक, दैट मीन्स आपका प्रिपरेशन हो गया. तो और दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये कितना कुछ पढ़ते चले जाएंगे, और एग्जामिनेशन के पहले तो इतना पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. पूरा क्लेटन बुक रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे इतना एक दिन में.
लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन बैंक के तौर पे बनाएंगे कि मेरे पास 17 क्वेश्चन ही है, तो मैं इजीली 17 क्वेश्चन तो कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे उसमें मेक श्योर कि आपका कोई आंसर नहीं लिखा होगा, ठीक है। अभी आप जो क्लास कर रहे हैं इसमें तो मैं आंसर बता देता हूँ एक्सप्लेन करके, लेकिन आप जो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे इसमें आप आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि अगर आपके पास आंसर होता है ना, तब हम लोग सोचते हैं अच्छा इसका आंसर तो यही होगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्रेन विल नॉट वर्क। लेकिन आपके पास आंसर अगर नहीं है ना, तब फिर ब्रेन आपका काम करेगा। और आपने फिर दो पेपर बनाना है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन एक बार देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ओके। एंड खुद को मार्क कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 15 क्वेश्चन सही हुआ अप टू 17, सो यू हैव गॉट 15 आउट ऑफ 17 इन चैप्टर 6। इस तरीके से आप करते जाएंगे ना, नेक्स्ट जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आप देखेंगे 17 आउट ऑफ 17 होगा, तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके से एक एक चैप्टर अगर करेंगे तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि 2 घंटे में आप पूरा क्लेडन बुक भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ये डायरेक्टली मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। मेरा ऐसा होता था, मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक देखता था और क्वेश्चंस हो जाता था, क्योंकि ये पता है अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा। तो आई कुड एबल टू रिवाइज क्लेडन ओनली इन 30 मिनट्स, एंटायर क्लेडन इन 30 मिनट्स। ये सुन के थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, करना डिफिकल्ट है, लेकिन आप भी अगर करोगे तो पहले टाइम लगेगा, मान लो 5 घंटे में पूरा क्लेडन ख़त्म होगा। उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होते होते उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको क्वेश्चन पेज पलटने में टाइम लगेगा। बस आधा घंटा तो पेज पलटने में ही चला जाता है, इतना सारा क्वेश्चन है। तो पूरा क्लेडन का अराउंड 1400 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप बहुत इजीली क्लेडन पूरा याद ही हो जाएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर दोगे, यही होना चाहिए। इतने बार प्रैक्टिस करने के बाद पूरा याद हो जाना चाहिए सारे के सारे ऑर्गेनिक का फॉर्मूला, सारे के सारे ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस। क्योंकि चैप्टर 6 से इस 17 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि 17 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 17 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर 6 खत्म है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स वाई 17 क्वेश्चन कर लीजिए तो आप सारे के सारे चैप्टर 6 के जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उतना सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 7 तैयार करेंगे, साथ के साथ आप तैयारी करते रहिए, तो एक बार में डायरेक्टली आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगेगा यार अभी पढ़ते नहीं है, ठीक है अगली बार पढ़ लेंगे, तो चलो अभी एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसा हो जाएगा तो टाइम भी चला जाएगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी मैं एक एक चैप्टर कराऊंगा, आप उसके साथ ही क्वेश्चन बैंक भी बना लीजिए और क्वेश्चन आंसर तो कर ही रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।